प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। Superficial expansion is the property of a solid due to which its area increases on heating. The property of a solid due to which its area increases on heating is known as superficial expansion. The property of a solid due to which its area increases on heating is known as superficial expansion। यानी जब हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो जब उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, उस टाइप के एक्सपेंशन को हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई मेटालिक शीट है जिसका एरिया से एस है, सो ओरिजिनल एरिया ऑफ दिस मेटालिक शीट इज एस एट टेम्परेचर T1। जब कोई टेम्परेचर T1 था, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर T1, तो इसकी लेंथ से L1 है, इसकी ब्रेडथ B1 है, तो इसका एरिया जो S है दैट इज L1 इंटू B1 लेंथ इंटू ब्रेडथ से इसका एरिया इस वक्त L1 B1 है, दैट इज S, दैट इज ओरिजिनल एरिया एट रूम टेम्परेचर से एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका एरिया जो है वो S है। तो जब हम इसको हीट देंगे, जब हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हम जानते हैं हीटिंग से सब्सटेंस जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी सॉलिड्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं जब हम उनको हीट देते हैं। तो चलिए हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसको हीट देंगे, तो तब हम कहते हैं कि इसका एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। से S1 बी द न्यू एरिया ऑफ दिस मेटालिक शीट। जब हमने इसका टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, से T2 मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बन गया, नया टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो rise in temperature is then change in temperature is T2 minus T1, that is 50 minus 20, that is 30 degree. Then its length will also increase, तो इसकी length L2 बन जाएगी और इसकी breadth भी increase हो जाएगी। Let B2 be the breadth of this metallic sheet, then new area of this is S1 metallic sheet, new area of metallic sheet say S1, that is L2 into B2. So this is the original area of this metallic sheet and this is the new area of this metallic sheet. So then we say a rise in area या change in area. So change in area is then change in area. तो change in area से we say S1 minus S, and change in temperature क्या हो सकता है, that is T2 minus T1। तो हम सपोज करते हैं ये जो चेंज इन एरिया से दैट इज स्मॉल चेंज इन एरिया से दैट इज डेल्टा S, एंड स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से दैट इज डेल्टा T। तो हम सपोज करते हैं लेट ओरिजिनल एरिया ऑफ शीट बी S। तो S हमने कहा कि इस मेटालिक शीट का ओरिजिनल एरिया है, और हम सपोज करते हैं लेट स्मॉल चेंज इन एरिया, स्मॉल चेंज इन एरिया ऑफ शीट बी S, डेल्टा S, स्मॉल चेंज डेल्टा S, जो हमने यहाँ कहा डेल्टा S दैट इज S1 माइनस S, दिस एरिया माइनस दिस एरिया दैट इज द चेंज इन द एरिया। अगर हम कहते हैं ये एरिया जो हमारा था, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 40 मीटर स्क्वायर था, अब जब ये चेंज हुआ से 42 मीटर स्क्वायर बन गया इसका एरिया। सो देन चेंज इन एरिया इज 42 minus 40, that is 2 meter square. So that is S1 minus S, 42 minus 40,
2 मीटर स्क्वायर. So हमने वो कहा small change in area be delta S. Therefore we suppose small change in area of sheet be delta S and small change in temperature is delta T. It was experimentally found that the change in या increase in, जो भी आप कहिए, change in area या increase in area, increase in area, say increase in area is number 1 directly proportional to original area, that is increase in area. Increase in area is delta S. It is directly proportional to original area, and original area is S. Number 2, it was also found that increase in area is directly proportional to rise in temperature. rise in temperature हमने क्या कहा, that is delta T, T2 minus T1. So that is increase in area, that is delta S is directly proportional to rise in temperature, that is delta T. See, this is first, see, this is second. Combine first and second, we get delta S is directly proportional to S delta T. जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वलिटी की साइन से, तो वहाँ पर हम कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं. तो यहाँ पर कांस्टेंट बीटा लिखते हैं, बीटा S delta T, where beta is the constant of proportionality, where beta is constant of proportionality and is known as coefficient of superficial expansion. This beta is known as coefficient of superficial expansion. तो अब अगर हम बीटा निकालेंगे, which implies that beta is equal to delta S divided by, इनको यहाँ शिफ्ट करेंगे, S delta T, which implies that beta is equal to delta S by S delta T. Beta is equal to delta S by S delta T, that is equal to change in area. Delta S is change in area, जो हमने पहले कहा था, small change in area divided by S original area into delta T, change in temperature. Or in other words, we can say beta may be defined as the small change in surface area per unit original area per degree Celsius. So beta may be defined as the small change in surface area per unit original area per
degree centigrade, per degree Celsius change in temperature. This is called the coefficient of superficial expansion. और इन बीटा और अल्फा के दरमियान क्या रिलेशन है? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन में रिलेशन क्या है? बीटा is equal to twice alpha. Beta is equal to twice alpha. This is the relation between coefficient of superficial expansion and coefficient of linear expansion. As we know, the coefficient of linear expansion of aluminum is coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion of aluminum, that is equal to 2.3 into 10 raised power minus 5. So what is then coefficient of superficial expansion of aluminum? That is 2 into this, that is 4.6 into 10 raised power minus 5. So coefficient of linear expansion of aluminum is 2.3 into 10 raised power minus 5, and coefficient of superficial expansion is 4.6 into 10 raised power 5 per degree centigrade, इसका SI यूनिट भी पर डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर हम यहाँ पर देखेंगे एरिया का जो यूनिट है से मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम भी एरिया का चेंज इन एरिया तो वो भी मीटर स्क्वायर ही हो सकता है, और एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर है. मीटर स्क्वायर cancels, so change in temperature, that is degree Celsius. So 1 by degree Celsius, so it is per degree Celsius. So SI unit of linear expansion is per degree Celsius, and SI unit of superficial expansion is also per degree Celsius. So the coefficient of linear expansion of aluminum is 2.3 into 10 raised power minus 5 per degree Celsius. So therefore coefficient of superficial expansion of aluminum is 4.6 into 10 raised power minus 5 per degree Celsius. और स्टील और कॉपर का क्या होता है? स्टील और आयरन का अगर हम देखेंगे, आयरन का coefficient of linear expansion, that is 1.2 into 10 raised power minus 5 per degree Celsius. तो फिर इसका क्या होगा? सुपरफिशियल आयरन का सुपरफिशियल कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 2.4 into 10 raised power minus 5 per degree centigrade, per degree Celsius. तो इसी तरह कॉपर का क्या है? कॉपर का है coefficient of linear expansion 1.7 into 10 raised power minus 5 per degree Celsius. और फिर इसका सुपरफिशियल क्या होगा? कॉपर का सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है that is 2.4 into 10 raised power minus 5 per degree Celsius. तो क्या रिलेशन है between beta and alpha, between the coefficient of the superficial expansion and the coefficient of linear expansion? This beta is twice alpha. So superficial expansion is the property of a solid due to which its area increases on heating, and beta is the superficial coefficient of superficial expansion, and it is equal to change in area per original area per change in temperature.